कल की तरह ही हम आज अपने इस 3 दिन के प्रवचन मालिका को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत। मैं हर रोज की तरह ही बड़ी सुरीली और मजबूत आवाज में ब्रह्मचारिणी सम्यका को अनुरोध करता हूँ कि मैं 𝑘𝗺𝗃 पंचशील विधायकशील लेकर अपने इस वर्ग की शुरुआत करें। सम्यका जी। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय धम्मचारी रत्नगुना और जो बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन कर रहे हैं आदरणीय धम्मचारी नागमित्र जी, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, पुण्यानुमोदन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज हम त्रिशरण पंचशील और सकारात्मक पंचशील लेंगे। 1 मिनट शांत बैठ के हम त्रिशरण पंचशील लेंगे। त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। और इसी के साथ मैं आदरणीय धम्मचारी रत्नगुना और आदरणीय धम्मचारी नागमित्र जी को सभी की ओर से धम्म देशना करने के लिए याचना करती हूँ। खूब खूब धन्यवाद सम्यका जी। So I would like to welcome Dhammachari Ratnaguna and all the Dhammamitra, Dhammachari, Dhammacharini, and all. And Sammeka ji has requested Ratnaguna to start your
second talk of this series. Thank you. Okay, shall I begin? You can start now. Okay. Yes, please. First of all, hello everybody. Very nice to see you all again. सबको हेलो, आप सबको देख के खुशी हो रही है? Today, मेरी आवाज किसी को नहीं आई होगी ना, बता दीजिए चार्ट में. सर क्लियर आ रहा है आवाज. Thank you. Okay. Today, as Nagamitra was drinking tea, as he was translating me, I'm drinking coffee today to go with you. कल नागमित्र चाय पीते हुए आपसे अनुवाद करते हुए सामने थे, आज मैं कॉफी पीते हुए आपके सामने. Okay, so yesterday I spoke about reflection in general, reflection on texts and reflection on experience. तो कल मैंने सर्वसामान्य जो चिंतन है उसके बारे में कहा था. दूसरा मैंने जो ग्रंथ है, किताबें हैं, उसको लेकर चिंतन का मायना बताया था, और साथ में चिंतन के अपने अनुभव क्या है वो बताया था. I also spoke about reflection on ethics and reflection on one's own dana and shila. तो कल मैंने नैतिक शीलों को लेकर भी चिंतन का अर्थ बताया था, साथ ही साथ दान और शील इसके बारे में भी चिंतन के विषय में कुछ बात करी थी. But today I'm going to look at a sutta from the Pali Canon. तो आज मैं पाली ग्रंथ के सूत्रों को कुछ बताऊंगा आपके बीच में. And it's from the Anguttara Nikaya, and it's called Upajjhatana Sutta. और वो है अंगुत्तर निकाय से उपजटना सूत्र. This is something that Bhante Sangharakshita and Subhuti highlighted for us in one of their 6 or 7 papers. और बंते जी और सुबुति ने दोनों ने मिलके जो एक पेपर निकाला था उसके ऊपर ये कहा था. This was in the context of talking about or discussing spiritual death or insight. जो कि हमारी जो आध्यात्मिक मृत्यु है या फिर जिसको हम अंतर्दृष्टि बोलेंगे उसके विषय में. So the Buddha begins abruptly by saying this. तो बुद्ध इस सूत्र में अपने उदान के रूप में ये बातें करते हैं. There are these 5 facts that one should reflect on often. ये जो 5 बातें हैं जीवन में अक्सर उस पर चिंतन करना चाहिए. Whether one is a woman or a man, lay or ordained. वो स्त्री हो सकती, पुरुष हो सकता है, सामान्य पृथकजन हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकते हैं. So I really like this opening because the Buddha is including all of his disciples. तो मुझे ये जो उनका कहना है वही बहुत प्रभावित किया, क्योंकि वो अपने सारे शिष्यों को उसमें सम्मिलित कर रहे हैं. So he's mentioned the 4 groups of disciples: men, women, lay, ordained. वहाँ वो अपने स्त्री पुरुष दीक्षित हुए या जो दीक्षित नहीं है
गृहस्थी है, उन सबको लेके बात कर रहे हैं. And nowadays we would say order members, mitras, men and women. और आज की भाषा में बोलेंगे धर्मचारी, धर्मचारिणी, धम्म मित्र. Yeah. And so in a way, the Buddha is saying all Buddhists should reflect on these 5 things often. और बुद्ध एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि सभी ने अक्सर इन बातों पर चिंतन करना चाहिए. So the first one is, I am subject to aging. तो पहले उसमें की बात है, मैं स्वयं बूढ़ा हो रहा हूँ, वृद्ध हो रहा हूँ. Apparently the literal translation is, I am the kind of thing that gets old. और अनुवाद इस तरीके से है कि जैसे मानो मैं कोई वस्तु हूँ और वो. And then he says, I have not gone beyond aging. Nagamitra seems to have frozen. Light is out. What shall I do? Light up. Come now, light. Hello, hello. शांतीप्रभू नागमित्र नाहीत का? मग Yeah. Is there anyone else here who can translate for me? Is there anyone else here who can translate for me? तुमचं नाव नाही? हे का नाग? Yeah. Just a minute. झालं वाटतं. 𝘍𝑗, are you going to translate for me? Just a minute. Just a minute. Hello. Just a minute. Okay. नाव का बरोबर आहे.
Yes, I'm here. Haha. Sorry. Okay. Electricity off. Oh. Carry on. Shall I carry on? Yes, please. Okay. So let's go back to the first reflection. There are 5 facts, etc. I am subject to aging. I have not gone beyond aging. तो 5 जो हमारे चिंतन है उसमें का जो पहला चिंतन है वो ये है कि मैं वृद्ध होने वाला हूँ, मैं ऐसी वस्तु हूँ जो या फिर ऐसी बात हूँ, मैं वृद्ध होने वाला हूँ. And another translation is, I have not escaped from aging. दूसरा भी एक उसका अनुवाद है कि मैं उससे कहीं भी बचाव नहीं है मेरा. So now this one, like all of the reflections, is clear and obvious to us. तो ये जो मतलब चिंतन है ये हमारे लिए बहुत सहज है. It's not obscure teaching. We just have to open our eyes and look around and even look in the mirror, and we can see that we and other people are aging. तो ये कोई हमारे लिए बहुत खोजने वाली बात नहीं है. केवल अपनी आंखें खुली रखना है और आंखें खुली रखकर अगर देखते हैं और खुद भी अगर मतलब इर्द गिर्द देखते हैं और कहीं अपने आईने में भी अपने आप को देखते हैं तो दिखाई देगा कि ये तो होता ही है. And Bhante Sangharakshita once said that the Buddhist teachings, you know, when the Buddha talked about impermanence and dukkha and so on, he said, it's not difficult, it's totally obvious if you just open your eyes. और संघरक्षित जी एक बार कहते हैं कि ये कोई बहुत खोजने वाली या बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, केवल अपनी आंखें खोलना है तो ये बात समझ में आ जाएगी. Now we reflect. In the Buddhist tradition, you reflect on things that you already know. बुद्ध धम्म में उन बातों पर आपको चिंतन करना है जिनको आप जानते हैं. First of all, you have sutta mayapanya, where you hear the teachings. पहली बात ये है कि वो जो बुद्ध धर्म में शिक्षा है वो जो सुत्त है उस पर चिंतन कर रहे हैं. And you know them, you know that's true, but then you need to know them better. You need to know them more deeply. तो आप जानते हैं उसको, नहीं जानते ऐसी बात नहीं है, पर आपको थोड़ा गहराई से उसको जानने की कोशिश करनी है. Bhante Sangharakshita once said that the central problem of the spiritual life is that we need to find emotional equivalents to our intellectual understandings. He has frozen again. Microphone is unmuted. Hello, Padmaja. Who else have we got?
Yeah, somebody just said that she could translate for me. I don't mind. You need to be unmuted though. Nivani it was. Hello? Yes, now it's okay. Ah, The number. Actually, electricity going on. electricity. Off and on. That's why. Ah, Yeah, that's why. I might have that problem later as well. Yeah, speak. Okay, we're ready. So I was just saying that this, all of these reflections are obvious truths, but we reflect on them because we're trying to find emotional equivalents to our intellectual understandings. So, अपने को ये करना है कि हम जो भी चिंतन करते हैं, उस चिंतन में हमारी भावनाओं का जुड़ा होना बहुत जरूरी है. One of the things I find interesting about us human beings is that we can know something, but at the same time, not really know it. हम मानव इस तरीके से देखते हैं कि हम चीजों को ऐसा समझते हैं कि समझ चुकी है, पर सही देखा जाए तो उसको हम पूरी तरह से जानते नहीं है. It's like when you kind of know something, but you don't want to know it. So you don't allow yourself to really know it. तो आप देखा जाए तो आपने स्वयं को उसको स्वीकार नहीं कर पाते. It's a little bit like if you're a parent and you're bringing up some children, one of them is very bad, and you don't really want to accept that fact. आप अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, उनको अच्छी देखभाल कर रहे हैं, पर एक जो बच्चा है शायद वो
उतना सही प्रतिसाद नहीं देता है. So you kind of overlook the facts. You don't really want to know it. You do know, but you don't really want to know. तो आप एक तरीके से Oh dear. sorry. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Could you repeat, please? Nagaloka. Hooray. Could you repeat, please? Okay, can I? Could you repeat, please? Ratnagula, repeat, please. Shall I carry on, Nagaloka? Hello. Yeah, can you repeat, please? Hello. Hello. Yeah, can you repeat, please? Are you getting my voice? Are you talking to me here, Nagaloka, or somebody else? Yeah. No, I'm talking to you. I'm asking you to. Okay. Could you repeat, Okay, please? All right. So I think we've done enough with the first reflection. We'll move on to the second reflection. ओके, तो हमने पहला जो चिंतन है उसको सुना है. अब दूसरे चिंतन के बारे में सुनते हैं. The second reflection is, I am subject to illness. I have not gone beyond illness. तो दूसरा चिंतन ये है कि मैं बीमार होने वाला हूँ और इससे कोई बच नहीं सकता है. Good. And the third one is, I am subject to death. I have not gone beyond death. और तीसरा ये है कि मैं मतलब मरने वाला हूँ, उससे मेरे को छुटकारा नहीं, मेरा मृत्यु होने वाला है. So these first three of the five reflections are, of course, the first three of the four sights that the Buddha saw. तो ये जो तीन जो चिंतन है, एक तरीके से जो चार दृश्य बुद्ध ने देखे थे, उनमें से ये तीन है. When he went out on his chariot with Chandra and he saw an old man, an ill person, and someone who was dead. तो जैसे कि राजकुमार जब चंद्र के साथ में बाहर टहलने गए थे, उस समय उन्होंने एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शैया पे लेटे हुए व्यक्ति को देखा था. Yeah, and so these three are the three things that cause the Buddha to renounce worldly life and leave home. और वही बात उनको अपने संसारिक जीवन से दूर जाकर जाने के लिए प्रेरणा दी थी. And so when we reflect on these first three reflections, we are following in the footsteps of the Buddha.
तो हम इन चिंतनों को जैसे बुद्ध ने जिस तरीके से अपने जीवन में इन चिंतनों का इस्तेमाल किया था, हम उन्हीं के कदमों को किस तरीके से करना है उसको देखेंगे। The fourth one is, I will grow different, separate from all that is dear and appealing to me. मैं मेरे जो भी प्यारे हैं, मेरे बहुत ही दुलारे हैं, करीब के हैं, उनसे मैं बिछड़ने वाला हूँ। This is something the Buddha often talks about, the fact that you grow different and other people grow different. तो बुद्ध अक्सर इसके बारे में कहते हैं और कहते हैं कि हमको जुदा होना ही पड़ेगा, हमको अलग होना ही पड़ेगा। So I will grow different, separate from, or I will become separated from all that is dear to me. Priya. तो जो भी मेरे प्रिय है, उन प्रियजनों से मैं जुदा होने ही वाला हूँ, मैं उनसे अलग होने ही वाला हूँ। This, of course, happens within this life. We lose people, we lose things. It can happen to anyone at any time. Sometimes we lose everything. ये हमारे साथ में होते ही चले आ रहा है। हम कुछ लोगों को खो दिए हैं, कुछ लोग कुछ वस्तुएं खो दिए हैं, और ये हमारे साथ में निरंतर घटते रहती है बातें, और एक दिन हम ये सब मतलब छोड़ने ही वाले हैं। But also, this one comes immediately after the reflection on death. और ये एक तरीके से मतलब देखो अपने मृत्यु के चिंतन के बारे में हम देख सकते हैं। So this fourth reflection could be that when you die, you'll become separated from everything that is dear to you. ये एक तरीके से जो चौथा चिंतन है वो आपको उस मृत्यु के चिंतन से ही उसका एक संबंध जोड़ता है, क्योंकि एक दिन जब हम मर जाते हैं तो सब कुछ छोड़ जाते हैं। So each one of these four reflections overcomes what would you call it? A vanity or an intoxication. Uh-oh. 𝘍𝙬, are you there? Hello. Light problem, Ratnaguna. I'll tell you what I'll do. I will chant a mantra until we can come back together and talk. This is the melody of this mantra you probably have not heard. Oh, you can't hear what I'm saying anyway. So, Om Amideva Hui. 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 Om Amideva Hui.
𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒𝑣𝑎 I'm just going to stop chanting just to see if anything's happening. No. Okay, I'm going to carry on chanting until Nagamitra comes back. 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒𝑣𝑎 Okay. Om Amidevari. Okay, shall we carry on? Yes, please. Sorry Okay. about today is a very difficult day. Okay, so I was saying that the first four, each one of them overcomes a certain intoxication, mada. You're going to drink, I'm going to drink. तो ये चार जो है एक तरीके से जो मद यानी एक तरीके से जो हमारी जो मानसिक अवस्था होती है जहाँ हम जैसे हम बोलते हैं ना मद प्रमाद थाना प्रमोद उस तरीके से हम मद में ग्रस्त हो जाते हैं उससे हमको ये वंचित है अलग करती है. So the first one, I'm subject to aging. Obviously, that overcomes the mada of youth, the intoxication of youth. तो जो हम पहला जो स्वयं के जो मैं बुजुर्ग बुढ़ा होने वाला हूँ. I overcame that a number of years ago, of course. Om Amidevahi. 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 𝑘𝗺𝗛𝓚, are you unmuted? Hello, you're muted. Oh, sorry. Ah, there we are. Sorry, there was a problem. The line internet. So Okay, carry on. Shall we continue, 𝘍𝗛𝗚? Yes, please. Okay. I'll just let you put your earbuds Can in. you hear me? I can hear you. Yeah. So the first of these. Can you hear me now? I can hear you. Yeah. The first of these reflections overcomes the intoxication of youth. The second, I'm subject to illness, overcomes the mada of health. ये जो कुछ
I didn't get it. Could you repeat, please? Yeah. The Just first, Sorry. So वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा दूसरा पहला जो है वो एक तरीके से हमको जवानी के जो एक जोश होता है उससे हमको वो जागरूक कर रहे हैं. And then the third one, I am subject to death, overcomes the mada of life. और जैसे कि हम एक तरीके से अपने जिंदगी के बारे में जो एक मदमस्त होते कि मैं तो पूरी जिंदगी जीऊंगा, उससे हम उस पर चिंतन करते हैं कि ऐसा नहीं है. And the fourth one, I am the owner of my actions. Oh no, sorry. No. The fourth one, I will grow different, separate from all that is dear and appealing to me. तो मैं जिस लोगों को अपना समझता हूँ, जिनको मैं अपना मानता हूँ, वो वैसा नहीं है, वो सब छूटने वाले. That overcomes the mada of attachment to things and people. वो एक तरीके से जो औरों के साथ में हमारी जो आसक्ति होती है या लगाव होता है, जुड़ाव होता है, उससे हम उसको देख सकते हैं. So now we come to the fifth one, but before we do that, I'll just say the first four are just facts of life. इसको कह सकते हैं कि हम अपने जीवन की वास्तविकता. We can't really do anything about it. That's just what it is to be human. तो हम केवल एक उस सब परिस्थितियों से जा सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं. But the fifth one is something that it comes down to you. You can change things. अगर जो पांचवा जो बात है एक तरीके से वो है कि जो हम बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं. So it's rather a long one. I am the owner of my karma. तो वो एक तरीके से थोड़ा लंबा है. वो है कि मैं अपने कर्म का मालिक हूँ. I am the heir of my karma. मैं अपने कर्म का वारिस. It means I have inherited karma. इसका मतलब है कि मैंने ये जो कर्म है उसको मैंने जमा रखा है अपने पास में, अपना वारिस बनाया है. I am born, or perhaps we could say reborn, because of my karma. आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ वो मेरे कर्म की वजह से हुआ. I am related through karma. मैं अपने You're muted. Yep. Did you get that? I am related through my karma. Yeah, I translate. Yeah. This one is a difficult one. It's difficult in the Pali as well, but it seems to mean that your karma is connected with others. तो ये एक तरीके से ये पाली में भी थोड़ा तकलीफदायक है क्योंकि ये बताता है कि हम किसी से जुड़े हुए हैं. And then he says, whatever I do, good or bad, that will I become an heir to. तो उसके बाद दूसरा ये कहता है कि जो भी मैं बनने वाला हूँ वो उस कर्म के माध्यम से ही होने वाला हूँ, बनने वाला हूँ. So we know this. We know that whatever we think, say, or do will have a karmic consequence. तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आप करते हैं
उस कर्म के हम पर परिणाम होते हैं। So whereas you can't do anything about the first four, you can do a lot about the fifth one. This is where your action comes in. तो हो सकता है कि वो चारों के बारे में आप कुछ कर नहीं पाए, मगर ये पांचवे का वाकई में आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। So what this means is that the Buddha is saying you've got to reflect on all these five things often. तो बुद्ध ये कहते हैं कि इन पांचों के बारे में हम अक्सर चिंतन करते हैं। And they're not very happy things to reflect on, really. The first four are not happy things. मगर ये जो चार है उसके शुरुआत के, वो करना इतनी मतलब प्रसन्नता वाली बात नहीं, इतनी आनंदित। But the Buddha said again and again he was just trying to alleviate suffering. तो यहाँ एक तरीके से हम अपनी जो दुख है उससे दुख से ऊपर उठने की बात करते हैं। And you can only relieve your suffering if you have a good diagnosis of what's causing you to suffer. और आप जब तक उसका निवारण नहीं करते, तो आप ठीक से जानते नहीं हैं, आप दुखों को दूर नहीं कर सकते। So he's asking us to really look at our situation, really see it, and that will make us happier in the long run. तो वो असल में अपने को वहाँ हमसे अपने आप को देखने को बोल रहे हैं, ताकि हम अपने आप को ठीक से देखें और फिर चुनाव करें कि हमको क्या करना है। So by reflecting on these things, we become wise and a bit happier. तो इन बातों के बारे में चिंतन करने से हम एक तो थोड़े सयाने बनते हैं और उस पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। But towards the end of the sutta, he says something very interesting. मगर इस पुस्तक के अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। Once you have reflected on these five things, you do something else. तो ये पांच चिंतनों को करने के साथ साथ कुछ और भी चीजें कर सकते हैं। So you then reflect that I am not the only one who is subject to aging. Everyone is subject to aging. तो आप वो चिंतन करते वक्त ये जरूर महसूस करते हैं कि मैं अकेला ही वृद्ध हो नहीं रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरे आजू बाजू भी लोग वृद्ध हो रहे हैं। I am not the only one who is subject to illness. Everyone is subject to illness. मैं अकेला ही बीमार नहीं हो रहा हूँ, तो सारे लोग इस तरीके से बीमार हो रहे हैं, होने वाले हैं। And you reflect on all five of these, but not reflect on you, but you reflect on all people, all humanity. तो वहाँ केवल ये पांचवें जो चिंतन है आपने अपने बारे में नहीं कर रहे, तो आप पूरी जो मानवता है, जो संसार में सारी मानवता, उसके बारे में भी आप देखते हैं कि उनके साथ ही ये चीजें हो रही है। So you could say that when you reflect on these five things as regards yourself, you're developing wisdom. तो जब आप इन पांच चिंतनों को करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में प्रज्ञा का विकास करते हैं। And when you reflect on the five things as regards everybody else, you're developing compassion. और जब आप इस तरीके का सभी के बारे में चिंतन करते हैं, तो आप उनके बारे में करुणा का भाव विकसित करते हैं। Yeah, so they're very, very good things to reflect on, and just remember the Buddha said you should reflect on them often. और ये इनके ऊपर चिंतन करना बहुत अच्छा। Uh-oh.
Okay, I'll call you back with the Amitabha mantra. Oh, you're back. Working. Yeah, no, I'm using a 𝘍𝙠 phone, and his phone is always busy. So many calls are coming, so I have to decline them. I'm sorry, you're a bit quiet. I couldn't hear that. Were you talking to me there? Yeah, I said that I'm using 𝘍𝙠 mobile at the moment, so he is very busy, and phones are coming, so I'm declining those phones. Okay. Personally, I think it's something to do with you, Nagamitra. That's the common factor. Thank you. Okay, so at the end of the very end of the sutta, the Buddha breaks out into verse. There's a verse. तो ये सूत्र के अंत में बुद्ध एक गाथा कहते हैं. He says, subject to birth, subject to aging, subject to death. तो कहते हैं कि हम सभी जन्म लेते, हम सब वृद्ध होते और हम सब मरते. Ordinary people are repelled by those who suffer. Yes, carry on. Ordinary people are repelled by those who suffer. तो जो सर्वसामान्य लोग होते हैं, ये जब वो बातें होती हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं. But then he says, and if I were to be repelled by people who are suffering, अगर लोग इस तरीके से इन बातों को लेकर दुखी होते हैं, it would not be fitting for me. तो ये कोई बात मुझ पर लागू नहीं होती. And then he says, as I maintain this attitude, जब मैं इस मेरे प्रवृत्तियों को देखता हूँ, knowing the Dhamma, धम्म को जानते हुए, I overcame all mada, intoxication, तो मैं अपने जो नशे से मुक्त होता हूँ, with health, youth and life, तो उस समय मैं अपने जो जीवन है मेरा और मेरी जो जवानी है, तंदुरुस्ती है, उससे मैं ऊपर उठता हूँ. as one who sees. जैसे कि कोई आदमी उसको ठीक से देखे तो. So I think that will do for the talk. It's 25 past 11 here. तो अभी मैंने उसके 11:20 में यहाँ तक आज का प्रवचन यहाँ ठीक है, ऐसा कहते हैं. So shall we have questions? फिर हम थोड़ा सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं. And today, can we have short questions rather than long ones? और आज हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं बजाय बड़े प्रश्नों. आप देखिए कौन सवाल. सवाल पूछने के लिए हाथ खड़े कर सकते हैं आप. I don't know if you were talking to me, Nagamitra. I could hear your voice, but I couldn't understand what you said. I'm asking people to
raise their hand, Ah, okay. Okay. so they could we could unmute them, and then they can ask questions. Okay. I just used the toilet. Hold on. I'll be 2 minutes. Sure. दीप्ति तीर्थदर्शन सर लाइव बंद कर सकते हो क्या? किसका तुम्हारा? तुम्हारा अनम्यूट है। ओके, एक मिनट। दीप्ति ताई का सवाल है। सर आपने बताया, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैं जब चिंतन करता हूँ तो मैं खुद अकेला विरुद्ध बुढ़ा नहीं हो रहा हूँ, आसपास के लोग भी विरुद्ध हो रहे हैं। थोड़ा इसको क्लियर किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, करता हूँ। वो अभी 2 मिनट। सर मेरा एक सवाल था, आपने बताया कि हम चिंतन करते हैं, हम अकेले वृद्ध नहीं हो रहे, आसपास के लोग भी वृद्ध हो रहे, तो इसमें हमारी माने ये चिंतन में क्या रहता है? सवाल पूछते हैं, वो आते हैं अभी 2 मिनट में, तो उनसे सवाल पूछते हैं। और कोई सवाल है खड़े, मतलब आज खड़े करने के लिए बोल दो तब तक। Nagaloka, were you talking to me there? Yeah, I'm talking to you now. You are here. Okay. So Okay. translating the question. Okay. As you said that when we think that people also are aging with us, so I'm not clear enough that how to see that people also aging with me. I'm sorry, I didn't quite catch what the question was. As you said that we are aging, and the same way people also nearby us are aging. So what that mean is how to relate that. Please explain more. Okay. I suppose what the question is asking is, how does it help if we reflect on that? Yeah. I think, I mean, the Buddha doesn't tell us the purpose of that, but I think what he's trying to do is get you to see that you're not the only one in this human situation.